Today I draw a sketch of Amitabh Bachchan. So आउटलाइन बनाने के लिए पहले मैं ग्रिड लाइन बनाता हूँ, वो भी मैजिक से. Oh yeah. So let's create the outline. How you feel about it? People say you ain't gonna be shit. Late night staying up, wishing you was different. The pills inside your dress is your only friend. Might take 2 or 3, cause what's the difference? Slow it down, trying to make a change because your father moved you out of town. Used to be a city girl, but living in a country now. Used to be an open book, but now you keep it secrets. आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं इसमें शेडिंग करता हूँ. Yes. So पहले वाइट हेयर के लिए मैं यहाँ पे इंडेंटिंग टेक्निक का यूज करूँगा. फिर उसके बाद 4B पेंसिल से कुछ इस तरीके से शेडिंग करूँगा. फिर उसके बाद 10B पेंसिल, फिर आई बॉल और उसके आसपास के एरिया में मैं शेडिंग करूँगा. जहाँ पे डार्क एरिया ज़्यादा है वहाँ पे मैं 10B पेंसिल से सेकंड लेयर क्रिएट करूँगा. हाईलाइट के लिए नीडेबल इरेजर और टॉम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करूँगा. और इलेक्ट्रिक इरेजर का भी. Back when shit was simple, smashing buttons on Nintendo. It was Letterman and Leno. Only smoke I knew about was blowing out the window. और लास्ट में व्हाइट जेल पेन से भी हाईलाइट करूंगा. I get sentimental on some could have done it better. Shit depends on how you. और उसको कटर की मदद से फिक्स करूंगा. The pressure make you sweat a bit, but fuck it, I'm competitive. And boy, you know them Jordans staying fresher than some peppermints. सेम वही प्रोसेस में दूसरी आई में भी अप्लाई करूंगा. Only rapper in my city, I'm the king of it. Shout out every single hater listening. Yeah, glad you give a shit. My life gon' be a big event. This sound like it need a feature from Chance. No way to reach him. Guess I'm reaching. Probably eating in France. Shit, I still pop up at arenas just to sneak in a flash. There ain't no secret. I'm just flying by the seat on my pants, man. Yeah, the jungle and the juice, man. I can feel the heat. Yeah, I can feel the heat, man. I can feel the heat. Chucking up a deuce. Heard you tryna get a piece. Heard you tryna get a piece. Heard you tryna get a piece. Hey, take my truck over Ferrari Sport. Black so fucking hard, I got a Charlie horse. We just sell. फिर उसके बाद फोरहेड में शेडिंग करने से पहले मैं यहाँ पे व्हाइट हेयर के लिए इंडेंटिंग लाइन बनाऊंगा. फिर उसके बाद HB पेंसिल से बेस लेयर क्रिएट करूंगा. उसको मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर लूंगा. फिर जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे मैं 4B पेंसिल से सेकंड लेयर क्रिएट करूंगा. उसको भी मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर लूंगा. एंड देन 6B पेंसिल से थर्ड लेयर क्रिएट करूंगा. फिर हाईलाइट के लिए नीडेबल इरेजर और टॉम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करूंगा. फिर हेयर में शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे व्हाइट हेयर के लिए इंडेंटिंग टेक्निक का यूज करूंगा. फिर उसके बाद 4B पेंसिल से फर्स्ट लेयर, फिर 8B पेंसिल से सेकंड लेयर और लास्ट में 10B पेंसिल से थर्ड लेयर क्रिएट करूंगा. हाईलाइट के लिए टॉम्बो मोनो 0 इरेजर और इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करूंगा. फिर चश्मा में शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज करूंगा क्योंकि वो फुल्ली डार्क है. हाईलाइट के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर और व्हाइट जेल पेन का यूज करूंगा. आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, बट दिस इज द मॉर्निंग ऑफ सेकंड डे और मेरा टेबल पूरा बिखरा पड़ा हुआ है. तो पहले मैं इसको सेट करता हूँ. यस, डन. सो लेट्स गेट बैक टू वर्क. अब मैं यहाँ पे ईयर में शेडिंग करूँगा. और उसके बाद चिक में शेडिंग करूंगा. सबसे पहले HB पेंसिल से बेस लेयर क्रिएट करूंगा. फिर जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे मैं 6B पेंसिल का यूज करूंगा. सेम वही प्रोसेस बाकी के एरिया में भी अप्लाई करूंगा. यहाँ पे मैं सेकंड लेयर के लिए 4B पेंसिल का यूज करूंगा.
अब बियर्ड बनाने के लिए व्हाइट हेयर के लिए मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज करूंगा। फिर उसके बाद 6B पेंसिल से मैं कुछ इस तरीके से फर्स्ट लेयर क्रिएट करूंगा। फिर उसको पेपर स्टम्प से कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर लूंगा। साथ ही साथ में लिप्स भी बनाऊंगा, तो उसमें मैं 6B पेंसिल से फर्स्ट लेयर क्रिएट करूंगा। फिर डार्क एरिया के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज करूंगा। फिर बियर्ड में 4B पेंसिल से सिंगल हेयर बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। फिर टॉम्बो मोनो 0 इरेजर से मैं हाईलाइट कर लूंगा। सो इसके साथ फेस इज डन। सो नाउ शेडिंग इन द क्लॉथ पार्ट। यहाँ पे मैं 8B और 10B पेंसिल का यूज करूंगा। Okay, my sketch is complete. So now enjoy the reveal. I hope you like it as much as I did. वैसे आपको मेरी ड्राइंग्स और वीडियोस कैसे लगते हैं और कोई सजेशन है तो कमेंट करना मत भूलना। Okay, thanks for watching. See you in the next video. Bye.